Hi everybody, welcome to Grateful Learner. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar and today is discussing the all about engineering drawing. So basically आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को समझ पाए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होते हैं। ओके, नाउ वाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्रॉम आइडिया टू रियलिटी। फर्स्ट यही चीजें बोल रही है। सो कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड प्रिसिशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नोइंग द कम्युनिकेशन। सो बेसिकली द इंजीनियर्स कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स डिजाइंस विथ प्रिसीजन एंड विथ क्लैरिटी। कम्युनिकेट करते हैं, डिजाइन को इलाबरेट करते हैं। इंजीनियर्स ड्राइंग आर ब्लूप्रिंट्स दैट गाइड मैन्युफैक्चरिंग असेंबली एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ द कोलैबोरेशन। So basically, drawings facilitate the collaboration among engineers, designers, and manufacturers, ensuring a shared understanding of the projects. Okay, now the precision. So basically, they define precise dimensions, tolerance, and materials, minimizing errors, and ensuring the quality of the final product. Okay. Now the language of lines, understanding drawing types and views. Okay, so basically the types. So the types of the engineering drawing. So basically the orthographic, the isomeric, the prospective explorers, the views and more. Now the views. So basically the front side, top and cross sectional offer a comprehensive understanding of the projects. Now the lines. So basically the lines, the visual line, the hidden line, the center line, the dimension line, and the external lines convey specific information. The language of lines. Okay. Now the so basically the antinomy. The antinomy of a drawing. So basically the autonomy of drawing, the title blocks and the dimension and all the things. Okay, now the so h, so basically the h, so the basically the contains essential information like project name, date, drawing number, and revision history in engineering drawing. Okay, now the dimensions. So basically the scales and measuring tapes, they indicate the size and the shape of the objects, and the including length, the width, the height, and the diameter, and the tolerance. So basically they specify the acceptable variation in dimension, ensuring parts fit together accurately. Okay, so basically now the orthographic projection seeing the 2D 3D in 2D. Okay, now the concept, now the views and the understanding. So basically the concept is projective views of the objects can like a plans, like a box on a wall. Now the views. So the front side, top and cross sectional views provide a complete representation and the understanding. So basically enables interpretation and the visualization of 3D projects for 2D from 2D drawing. Okay, now the decoding symbols and the convention a visual glossary. So basically the materials, the surface finish, the dimension, and the tolerance. Okay, now the materials. So basically the symbols represent materials like steel, aluminum, and plastic. Now the surface finish. So the surface finish indicates roughness, texture, and publishing labels. Now the dimension. So basically the dimension, the arrows, lines, and numbers define measurement and tolerance of the dimension. Now the tolerance. So basically tolerance symbol express expectable variation in dimension and the angles. Okay, now the CAD, the digital evolution engineering drawing, the CAD computer aided design. So basically the efficiency reduce drafting time, facility repeat prototyping, and timely design. So the precaution. So the precision CAD software ensures the accurate dimension, tolerance, and the seamless integration with manufacturing. Now the collaboration. So basically they allow for a real time collaboration on projects, streamlining communication and design process. The innovation enables advanced modeling and visualization, fostering creativity and the new product development. Okay, now the drawing standards. So basically, ANSI, American National Standard Institute, the engineering drawing use the United States ANSI, the American National Standards Institute, so provide guidelines for creating engineering drawing and ensuring consistency. American National Standard Institutes. Now the ISO, International Organization for Standardization. Okay, now the globally recognized ISO standard the promote international communication and collaboration engineering design. Okay, now the reading of the materials. Now the identify the title block and understand the reading. How to read the reading in drawing. Okay, identify the title blocks understand the project, the drawing number, the revision history. Now the analyze views.
सो द सेकंड स्टेप इज एनालाइज द व्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब ड्राइंग शीट देखते हो, आप प्लान देखते हो, उसमें आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ब्लॉक करना है। उसमें आप देखिएगा अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम रहेगा, ड्राइंग नंबर रहेगा, रिविजनरी हिस्ट्री, हिस्ट्री रहेगी। रिविजनरी हिस्ट्री इन द सेंस लाइक जो प्लान में सारी चीज़ें आपको दी गई है वो ब्रीफली साइड में एक्सप्लेन रहता है कि आपको जो सारे इंस्ट्रूमेंट है डायमेंशन लेना है, वो mm में लेना है, इंचज में लेना है, रिबार्स आपको किस तरीके का यूज़ करना है, कितने रिबार्स यूज़ करने हैं, कितने बीच का डिस्टेंस आन डेप्थ होगी, सारी चीज़ें क्या होती है कि रिविजन हिस्ट्री में यहाँ पे मेंशन रहती है साइड में, अगर आप सही से ड्राइंग को देखेंगे। दूसरा स्टेप्स क्या करना है, ड्राइंग को लेकर के एनालाइज व्यू, व्यू को एनालाइज करना है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रंट साइड एंड द टॉप व्यूज आपको देखने हैं। नाउ द डिकोड डायमेंशन एंड द टॉलरेंस। सो बेसिकली द अंडरस्टैंड द साइज शेप्स एंड एक्सेप्टेबल वेरिएशन इन डायमेंशन। ओके, नाउ द interpret symbols and convention. So basically the understand the meaning of symbols and convention used in drawing. Okay, now the four from blueprint to the all the things. Okay, now the engineering drawings and universal and all the things. Now the precautions. So basically the precaution accurate or detailed drawing essential of for product quality. Now the digitalization. So basically the digitalization, the CAD software, computer aided design software is evaluating the design and manufacturing process. And now the skills. So basically the skills acquire the things the engineering drawing to enhance the success in many industries. Okay. Now thank you so much. Thanks for watching this video. If you are enjoying this video, please like and subscribe. This video is all about the engineering drawings. Hope you are enjoying this video. We are meeting with another videos. आप दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आइडिया हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच। वी आर मीटिंग विद अनदर वीडियोस।